come back to YouTube and then Facebook check. Facebook should be okay. Check Facebook. Go live. Chaliye, we are live to the world. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and we are extremely sorry. 26 minutes delayed because of technical hitches. The blame, I don't know. That is why we have come up with a new link which has to be circulated, which we did circulate. Without wasting much of the time, we say the guest of the today, I am the sufferer, Mrs. Fatema, who has been fighting a domestic violence case, and what are her difficulties in spite of the constitution providing the rights. Through rights you have to seek justice. Then what is happening? And then we have my colleague Dr. Susan Raj, who is a detoxification expert as well as a social worker with whom I work for various other aspects which are affecting the society. Welcome to you both. And even I wanted Dr. Sandeep, because he is not well, a sore throat and fever. I only hope he will join in the mid-course. Fatima ji, what is your problem? Now let the world know what is this domestic violence act which has been there, and how you say that 60 days time the Delhi High Court or whichever Maharashtra High Court which has passed, that these cases should go for trial and the judgment should be pronounced in 60 days, so that those who are seeking under Domestic Violence Act, they get justice. And there is other side of the coin. Others were also telling me, sir, many cases are there wherein they are trying to misutilize these provisions under domestic violence or 498A dowry harassment cases to settle scores with their male partners or their families. That is also fine. That is other side of the coin hearing. We are welcoming such types of views also. But here, our guest Fatima, from where did she come? What is her problem? Now where is she staying? Let us hear from her. Yes, Fatima ji, please go ahead. Hello, namaste, assalamu alaikum. The thing is, 498A is also part of domestic violence, but that is not the only that is not the only thing to file a domestic violence case. Domestic violence case is under section 2005. According to the court also you can file, and 498A through police court mein jata hai. So because of few women who misuse this act, the genuine sufferers are suffering today. Because जब मैं कोर्ट में जाती हूँ, I see so many women are fighting domestic violence cases, और सालों से चल रहा है, more than a year, कुछ का तो 2, 3, 4 साल से चल रहा है cases, and they are genuine sufferers. They come with the kids के उनको अभी तक husband पैसा नहीं दे रहे, वो लोग घर से निकल गए हैं, अपने parents के वहाँ रह रहे हैं, so they are just somehow they are managing the finance. So because of few women who misuse this law, the genuine sufferers are suffering today. So जो लास्ट जजमेंट जो हाई कोर्ट ने आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था कि 498A में मिसयूज होता है तो इसमें अरेस्ट वारंट नहीं होगा, which is actually इसको it's high time that somebody amends this law, this judgment, because genuine sufferers are suffering. Because 498A के अंदर if there is evidence, based on evidence you can arrest the victim, accused. पर वो भी नहीं होता है. मेरे केस में तो एटलीस्ट वो नहीं हुआ in spite of so many evidences. और दूसरी बात ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस has got nothing to do with divorce. अगर किसी का डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करना है आफ्टर डिवोर्स तो भी कर सकता है, as long as it is within a time frame of 4-5 years के अंदर. जितना ज्यादा डिले करेंगे उतना जज आपको पूछेंगे इतना डिले क्यों किया. अगर आपका डोमेस्टिक वायलेंस मैरिज के अंदर था तो डिवोर्स के 5 साल के बाद क्यों फाइल किया, which is very rare. Usually तो immediately सब लोग फाइल करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस, even if it is after divorce. फातिमा जी, पहले हम ये घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस पार्ट ऑफ 498 डाउरी हरासमेंट केस जो भी है, 498 डाउरी खाली डाउरी समझ में आता, लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं 498 जो है एक हिस्सा है
उसी का 498 का हिस्सा घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। आपके साथ क्या गुजरा, आपके साथ क्या हुआ, पहले आप तफसील से आप बताइए, आप कहाँ से आए, क्या हुआ, ओके। आपके शहर कहाँ हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं, क्या तकलीफ है आपको, पहले अच्छा। पहले वहाँ से शुरू कीजिए। यू स्टार्ट ओके। फ्रॉम योर ओन केस, फ्रॉम वेयर आर यू, ओके। वेयर इज योर हस्बैंड, वेयर आर योर किड्स, व्हाट हैज हैपेंड विथ यू। I am born and brought up in Bombay, but after my marriage, I had gone to Kuwait. हमारे प्रॉब्लम थे मैरिज में, पर जब एक्चुअली मैं जब डिवोर्स की स्टेज पे आ गया तो दे स्टार्टेड टॉर्चरिंग। तो व्हेन आई केम टू इंडिया आई फाइल्ड द डोमेस्टिक वायलेंस केस। मैंने कुवैत में रहते व्हेन आई वाज देयर इन कुवैत ओनली आई हैड आस्क्ड वन लॉयर इन बॉम्बे दैट आप मेरा केस फाइल करोगे तो मैं आई विल कम एंड वी विल स्टार्ट द पेपर वर्क। तो फाइलिंग में थोड़ा टाइम हुआ, उसके नहीं बाद नहीं, भी क्या हुआ आई आपसे, डिड। हादसा क्या हुआ, आप कुवैत से मुंबई क्यों आए हैं, आप, आपके बच्चे कहाँ हैं, आपके शहर का नाम क्या है, क्यों हुआ ये सब, किस तरह की हिंसा हुई आपके ऊपर, ये बताइए पहले। मेरे डोमेस्टिक वायलेंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल बीटिंग हो, मेंटल फाइनेंशियल इमोशनल टॉर्चर भी उसको डोमेस्टिक वायलेंस ही बोला जाता है। तो मेरे केस में फिजिकल कम है, बाकी इमोशनल और फाइनेंशियल इश्यू ज्यादा था मेरे मैरिज में। तो वो हम लोग ने मैरिज काउंसलिंग भी किया, वी डिड गुड, मैरिज काउंसलर्स को हमने अप्रोच किया टू सेव द मैरिज फॉर द सेक ऑफ माय सन हु इज विद माय हस्बैंड राइट नाउ इन कुवैत। तो हमने बहुत ट्राई किया कितने साल मैरिज का को है आपका सर्वाइव बच्चा, करने के कितने लिए। साल का है आपका बच्चा, कितने साल का है। अभी अभी 12 साल का है। 12 साल का लड़का, तो आपको हाँ। 12 साल का लड़का और आपके शहर के साथ कुवैत में रहते हैं, तो ये खाली हाँ। जिस्म के ऊपर ही जो हिंसा नहीं है, लेकिन दिमाग के ऊपर हाँ। असर और आपके आर्थिक व्यवस्था, आप ज़िंदगी जीने की, बोलिए आप तफसील से बताइए। आई वांट यू टू स्पीक in a complete format as to why this has happened, when did this happen, when were you married, आप शादी कब हुई आपकी। 2007 2007। कहाँ हुई शादी आपकी। बॉम्बे में। मुंबई में। चलो, मुंबई में शादी हुई, और कितने साल मुंबई में थे आप। आफ्टर मैरिज आई गॉन टू कुवैत विद इन आफ्टर 2 months। ओके, 2007 में शादी हुई, बस तुरंत आप कुवैत चले गए। हाँ, 2 महीने के बाद चली गई 2 है। महीने, तो 2007 में ही चले गए आप। हाँ। अब वहाँ पे हम बताइए। न्यूक्लियर फैमिली थे, मी और माय हस्बैंड, माय इन-लॉज वर इन बॉम्बे। योर इन-लॉज वर इन बॉम्बे, और खाली आप और आपके हस्बैंड कुवैत में थे। क्या करते हैं Yes। आपके हस्बैंड। वो जो जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं। वो आईटी के फील्ड में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में इन कुवैत। हाँ। तो बोलिए, आप बताइए, 2007 में आप माइग्रेट हुए कुवैत, आप और आपके हाँ। हस्बैंड ही थे, और आपको 12 साल हाँ। का लड़का भी हुआ। तो 2007 से हाँ। आपको क्या हुआ, क्या तकलीफ है, ये बताइए लोगों को, तो समझ में आनी चाहिए। अच्छा, यूजली हम मोस्ट ऑफ दी वुमेन का तो मुझे पता नहीं, पर मैं बीइंग एन हाईली एजुकेटेड आपके आपके बारे में ही बताइए, दूसरों के बारे में मत मेरे जाइए बारे अभी। में हाँ, मेरे आपके बारे में मेरे बारे बताइए। में बता दूं, हम्म, being from a family where my parents have taken very good care of me Yeah. and my girl, जो बोलते कि लड़का है तभी अच्छी परवरिश मिलती है, मेरे केस में ऐसा नहीं है। माँ बाप ने लड़की होने के बावजूद अच्छे से हमको बड़ा किया है, हमको एजुकेशन भी दिया है। लाइक वी वर नेवर बीन फेल्ट लाइक यू वी हैव गॉट अ बॉय, वी हैव गॉट अ गर्ल एंड नॉट अ बॉय किड। सो वी वर ऑलवेज पैम्पर्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गर्ल चाइल्ड। So वो हमको हमेशा we had a good life as a parents and kid staying with my parents. So I assume कि obviously marriage के बाद या तो same level पे रहेगा या तो और ऊपर level पे I will enjoy my life, but not in a lower level. So वो तो within first month of in fact engagement के time पे ही मुझे पता चल गया कि जिस बंदा maybe he might be an NRI, but he is financially बहुत कंजूस type का था। मतलब in spite of having the money, he would not spend on me. एंड जितना मैं जानती हूँ आजकल भी, इवन नाउ इन 15 years back, if any person is getting engaged, they are so excited कि we found a life partner, उसको घुमाना है, उसको सब जगह लेके जाना है। मेरे केस में ये स्टार्टिंग से नहीं था। वो कुवैत में था, वो 2 ट्रिप किया था उसने ड्यूरिंग एंगेजमेंट टाइम ऑफ 1 year। तो दोनों ट्रिप में ही वुड नॉट लाइक टेक मी आउट, स्पेंड नहीं करता था मेरे ऊपर। तो मम्मी हमेशा बोलती थी तू खा पी के आई ना। मैंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ राउंड मार के छोड़ दिया घर पे, खाना भी नहीं खिलाता था बाहर। One time I said, at least let's have a candlelight dinner because next time you will come, we'll be into marriage.
This is the only engagement 1 month I must have spent with him because he used to be in Kuwait. तो वो कैंडल लाइट डिनर के लिए भी सीधा मेरे मुंह पे फ्लैट मना कर देता था वो. तो आई वाज लाइक मम्मा मैं कैसे शादी करूं इस बंदे के साथ जो एंगेजमेंट में भी इतना he's not expressive, he's not spending money, he's always doing kitch, and financially he's sound है. He's not that he's having बहुत लोन है फैमिली का, ऐसा कुछ भी नहीं था उसके. तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम इंडिया छोड़ के बाहर जाओगे, इन-लॉज यहाँ पे, ऐसा घर बहुत मुश्किल से मिलता है, वो एडजस्ट हो जाएंगे. सम मेन चेंज आफ्टर मैरिज. वो करते करते 1 साल तो एंगेजमेंट का निकल गया. जब निकाह का टाइम आया तो निकाह में भी मुस्लिम्स में एक रिचुअल होता है जो हमारी कम्युनिटी में है दाऊदी बोहरा में कि व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, निकाह में जोड़े के साथ कपड़े के साथ कुछ सोने का देना होता है. तो वहां पे भी उन्होंने चीटिंग किया. हमको एक बैंगल्स दिए जो इमिटेशन था, ऊपर से दूर से लगता था कि ये शायद गोल्ड है. तो वन ऑफ माय आंटी इन द रिचुअल सिटिंग शी लाइक दिस इज नॉट रियल गोल्ड, इट लुक्स इमिटेशन. So I told my mom, please go and check these bangles from a jeweler in nearby area. Is this gold or is it imitation? तो वो ज्वेलर ने भी इतना हमको बोला ये सिल्वर भी नहीं है, तांबा है मैडम. मतलब वो ब्रॉन्ज का मेटल के ऊपर पानी चढ़ा के सोने का लेके आया था. सोने का पानी भी नहीं था, सिर्फ गोल्ड कलर का पानी था. तो आई वाज लाइक मम्मी मुझे नहीं करनी है ऐसे घर में शादी जो शादी का बेस ही अगर झूठ के ऊपर हो. हाउ कैन यू लाइक trust to family like this? बोलते ना foundation is the key for anything in today's time. Whether it is building or whether it is a relationship, everything foundation is very important. तो वहाँ पे भी मम्मी ने वही like being the normal mother जो society के अंदर ते दब जाते कि अब आवाज नहीं उठानी है. I stood my ground, but how much can I resist? मम्मी ने बोला शादी कर ले. We insisted them to give us a gold. So after 4-5 hours they gave something in gold and they went because we demanded. I said मैं नहीं करूंगी निकाह अगर आप ऐसे हमारे साथ चीट करोगे. पूरे एंगेजमेंट में तो मैंने कुछ नहीं बोला, अभी एटलीस्ट स्टार्टिंग ऑफ द मैरिज में तो ऐसा नहीं करना चाहिए. तो फिर because I insisted, my aunt and my mom, then we got the gold thing which was a part of the ceremony. Then after that he went to honeymoon after marriage and all that. तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गया. किधर गए आप हनीमून? हनीमून किधर गए आप? मॉरिशस के. तो he took you to Mauritius. He took you to Mauritius. निकाह में गड़बड़ हुई, गोल्ड नहीं दिया रिवाज के साथ जो भी है कस्टम है. Your mother made you made them to give you gold. The first step was misstep, but anyhow it was corrected and he took you to Mauritius. He took you to Mauritius. वहाँ तो कंजूस पना नहीं था. वर्किंग इन ट्रैवल फील्ड तो कम पैसे में हो गया. मैं तो वहाँ पे भी उसकी किचकिच तो थी. तो आई वाज लाइक आई एम वर्किंग इन ट्रैवल फील्ड, आई विल गेट इट इन डिस्काउंट, अ गुड पैकेज फॉर अस. सो देन दैट्स अगेन ऑन माय इंसिस्टिंग. वो तो हमेशा ही यूज्ड टू ऑलवेज रेजिस्ट स्पेंडिंग ऑन थिंग्स. तो वहाँ पे भी यूज्ड टू लुक एट अदर गर्ल्स एंड यूज्ड टू हैंग अराउंड विद अदर फीमेल्स. आई एम लाइक आई एम योर वाइफ, यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद मी. सो वहाँ पे भी हमारा झगड़ा हुआ था. तो जैसे ही घर पे आए मैंने मम्मी को बताया, मेरी कजिन को मैंने बताया कि आई एम नॉट हैप्पी, हाउ विल आई गो टू कुवैत. अभी तो मैं कुवैत गई नहीं थी. 1 month मैरिज के अंदर ही हनीमून हो गया था. तो वो हम सुनते ना एनआरएच के साथ कितना टॉर्चर होता है, तो वो मेरे दिमाग में वही बैठ गया था कि मैं वहां चली गई और मुझे वहां से इंडिया आने में प्रॉब्लम हो गया तो मैं क्या करूंगी. तो कैसे भी करके वो भी कॉन्फिडेंस ले लिया फैमिली से कि आप जाओ कुछ नहीं होगा. तो वहाँ पे भी और एक इंसिडेंट हो गया. पासपोर्ट जो बनाना पड़ता है जाने से पहले हस्बैंड के नाम पे. तो वहाँ पे अगेन आई सेड ओके नाउ यू पे मी द मनी टू मेक द पासपोर्ट इन योर नेम. आई हैव द पासपोर्ट इन माय नेम. So that also he refused to pay. I told his father, what kind of a son is yours? He's not paying for the passport which I'm his wife. अभी तो मेरा निकाह हो गया, मैरिज हो गया है, अभी भी खर्चा नहीं दे रहा है. तो वहाँ पे वापस एक थोड़ा झगड़ा हुआ था. So again my mom and dad, I stood my ground. I said no, they will pay. Why should we pay? Mom is like नहीं हम पे करते हैं ना जाने दो. Like why should we pay? He will pay. मैं उसकी वाइफ को उसको पासपोर्ट बनाना है उसके नाम का तो वो पैसा देगा. So अभी obviously again they gave the money, but after all these fights, like I have to fight for my own rights. The basic rights तो मेरा है. मैंने कुछ ज्यादा तो कुछ मांगा नहीं है. मैंने ना दहेज मांगा है ना कुछ डाउरी मांगा है कि ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स मांगी है. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. फिर when I went to Kuwait also same condition. Every year I used to like have fights with him almost every day.
कुछ भी खाने को ला रहा हो, कुछ भी बाजार में से खाने को आइटम्स लाना हो, हमेशा उसकी किच रहता था, ये नहीं लेना, ये मत लो। घर कैसे चलाऊं मैं? 2 सब्जी पे 2 दाल पे तो ही ना घर चलती है। कुछ वैरायटी अगर कुछ नया बनाना भी हो तो सामग्री तो चाहिए ना घर में। तो वो हमेशा के वो झगड़े तो हम हर साल आते थे इंडिया, तो मैं हमेशा इन-लॉज को मैं बताती थी कि आपका बेटा बस फोन पे कितना बताए ना, फोन पे nobody has a time to listen. So I used to come down to India to tell them about their son that इतना प्रॉब्लम हो रहा है मुझे वहाँ पे। वो खर्ची भी नहीं देता है, पैसा भी नहीं देता है, जब पॉकेट मनी देना चाहिए वाइफ को वो भी नहीं देता था। तो हमेशा एटलीस्ट मेरे इन-लॉज इतना सपोर्ट करते थे मुझे स्टार्टिंग में कि नहीं, माय सन इज रॉन्ग, वी विल टेल हिम, वी विल गाइड हिम टू नॉट टू डू दिस। 1 साल किया, बाद में उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया। देन इट वाज जस्ट लाइक आई वाज लिविंग। Then by third year I had got pregnant and had delivered. So again for my son's sake I continued in this marriage कि यार ठीक है, एटलीस्ट मुझे खाना पीना तो देता है, मुझे कहीं घुमाना जाना तो कहीं वंस इन अ व्हाइल लेके जाता है। अनलाइक अदर वाइफ्स ऐसी इतनी भी छूट नहीं मिलती है। Some husbands don't even earn. Like I've seen such cases. So then I said, okay, at least better off than the others. But I'm like, मैं तो अकेले रह के भी इतना कमा सकती हूँ, you know, being that what do you call women empowerment जो होता है ना, I don't bend just because I'm a woman. Why should I bend? Kind of attitude is what is my attitude. Why should I listen to him? तो वैसे करते करते 8 साल निकल गए मैरिज में। फिर हमने बोला अभी हमको डिवोर्स चाहिए, आई वांट डिवोर्स। तो फिर हमने बोला मैरिज काउंसलिंग करते हैं। हमारे फैमिली मेंबर ने बोला मैरिज काउंसलिंग करते हैं, बिकॉज इतना बड़ा इश्यू नहीं है, वो खर्ची नहीं देता है, वो घुमाने नहीं ले जाता है, हर बात में टोकता है, विच इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एवरी हाउस होल्ड। बट सिंस यू कैन नॉट टॉलरेट, लेट्स डू मैरिज काउंसलिंग। तो मैरिज काउंसलिंग में भी गए, वहां पे भी पहले काउंसलर ने उसको ही बोला कि आप गलत हो, आपको ये सब करना चाहिए, शी इज एनीवेज एडजस्टिंग इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। सेकंड काउंसलर ने भी यही बोला, थर्ड ने भी यही बोला। बट थर्ड काउंसलर ने तो बोला बेटर है आप डिवोर्स ही ले लो, बिकॉज ही इज नॉट वर्थ बीइंग अ हस्बैंड। ही इज लाइक बहुत छोटी छोटी बातों पे वो मेरे से लाइक यूज्ड टू लिटरली शाउट एट मी इन पब्लिक। एंड अभी हाथ उठाना भी शुरू हो गया था लास्ट 5-6 years ऑफ मैरिज में। तो आई वाज लाइक देन दैट एक हद तक तो डोमेस्टिक वाले थर्ड मैरिज काउंसिल ने खुद देखा था, उन्होंने खुद देखा हुआ था कि उसने कैसे मुझे मिसट्रीट किया। तो उसने उनको बोला कि आप अपोलोजाइज करो फातिमा को, आपने गलत किया है। तो ही इज विटनेस टू द डोमेस्टिक वायलेंस दैट आई हैव बीन थ्रू। तो जब हम फाइनली अभी 2019 में जब डिसाइड किया कि नहीं अभी तो कैसे भी करके अलग होना है, पर मैरिज काउंसलर ने भी बोला कि आप दोनों ने ट्राई किया सर्वाइव करने को, मैरिज में नहीं हो रहा है, हैप्पीली डिवोर्स कर लो, दोनों कुवैत में काम करो, बच्चे को बड़ा करो। So this is what we decided. We will happily divorce and we will bring up our kids. But my father-in-law, he had come to Kuwait at that time. He brainwashed my husband. He's like, नहीं बच्चा उसको नहीं देंगे, उसको कुछ नहीं देंगे, उसको यहाँ से कैसे भी करके इसको निकाल और इंडिया भेज, और हम इंडिया में डिवोर्स सेटल करेंगे, कुवैत में। So I was mentally tortured to go to India. And they said, you go, we will come and we will finalize the divorce. Abhi exam school चल रही है, we will come next month. So I had to come to India in 2019 in December. I was like so mentally tortured. My mom was crying every day and she could not see me crying. Like, इधर आजा, हम community के through बात करके हम settle करवाते हैं। So he did not come down. पूरा Jan निकल गया, Jan के end में he finally came down. That too, he did not allow me to meet my son. He came down with my son, but he did not allow me to meet my son. And 15 December 2019 when I came, 16 December I called to speak to my son. My son is refusing to talk to me. I like, what? He brainwashed my son against me in one day. कि तुम्हारी माँ ने तुमको छोड़ के चला गई है, she is bad, मतलब क्या क्या उसको डाला होगा वही जाने। because ये तो मेरे को थर्ड मैरिज काउंसलर ने भी बोला था, he is very good in manipulating people's mind, even adults he can manipulate. तो imagine my बच्चा is so small, उसको जो बोलेगा वो तो सुनेगा। तो I was so devastated. In one day I was like, I could not even go back to Kuwait. My mom is like, वो आएगा करके I wait for 1 month. He came down. He did not let me meet my son. My community, Dawoodi Bohra community, उन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं किया मुझे। वो बच्चे को लेके आया, मैंने बोला उसको बोलो यहाँ पे लेके आओ, मस्जिद में कम्युनिटी के अंदर ऑफिस में लेके आया, मुझे इस बच्चे को देखने तो दे। कम्युनिटी ने बिल्कुल नहीं हेल्प किया हमको, बिल्कुल नहीं। Then they went away and I committed suicide at that time because my mom was pressurizing What? me कि you do second marriage. What, Fatima? You Come don't, again. Come again. You committed suicide. Yeah, I did commit because I had almost given up.
because parents are not supporting. Husband had community was not supporting. And husband is no ways trying to adjust into this thing. So I had no other choice but to do that. But Allah saved my life. I was in coma for almost a day or कब so. था ये? I got life. कौन सी साल में ये हादसा हुआ आपसे? ये कौन सी? 2020 जैन एंड में हुआ था. ओके, वेरी सैड. ओके. हाँ, और सेफी हॉस्पिटल में रिकॉर्ड्स है, सब कुछ है. तो फिर देन फेब में मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारे पास कुवैत का वीजा है, तुम कुवैत चले जाओ, वहाँ पे लॉज वुमेन ओरिएंटेड है. इंडिया में तुम फाइल करोगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा. दैट वाज अनदर डिसअपॉइंटमेंट. बोला इंडिया में मत करो कुछ भी. इंडिया में यू विल नॉट गेट जस्टिस. यू विल टेक टू मच टाइम. केसेस यहाँ सालों तक चलते हैं. तुम्हारे पास कुवैत का वीजा है, तुम कुवैत जाके कुवैत में फाइल करो केस. वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में वुमेन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. सो आई टुक द करेज एंड आई वेंट बिकॉज आई हैड द वीजा. और वहाँ पे मुझे आने नहीं दिया घर में. वापस मुझे बहुत परेशान किया. मेरी कम्युनिटी ने फिर से हेल्प नहीं किया, पुलिस ने हेल्प नहीं किया. सो आई वाज कैसे भी करके मैंने लॉयर हायर किया. तो उसने मेरे लॉयर को भी ब्राइब करके उसको उसकी तरफ ले लिया. आई केम टू नो दिस वेरी लेटर. आफ्टर 2-3 months आई केम टू नो फ्रॉम वन ऑफ द अदर लॉयर्स कि योर लॉयर हैज बीन ब्राइब because whatever I see your file, it clearly shows she has not done anything in your case, which she should do as a lawyer. तो वहाँ पे भी मुझे पता चल गया कि इसने इसको भी खरीद लिया है. तो कुवैत में मेरी कम्युनिटी ने भी मेरे को 20-25 लोग के बीच में मुझे बिठा के डराया कि तुम इसको डिवोर्स नहीं दोगे तो तुम्हारा इकामा हम कैंसिल करके तुमको यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे. इतना मेरे को इतना टॉर्चर किया है मेरी कम्युनिटी ने. और लिटरली वो सबके सामने मुझे बोला कि तुम्हारा इकामा हम कैंसिल करके तुमको यहाँ से भेज देंगे. I said I will not give you my passport. How you will cancel my इकामा? ऐसे तुम पासपोर्ट नहीं दोगे तो भी हम तुम्हारा इकामा कैंसिल करेंगे. You don't know our power. So I was like, oh shit, अभी मैं क्या करूँ, you know? And this time I was like, I will not do again that same mistake of suicide. I will take my son, no matter what. I searched for another lawyer. I searched. बहुत कुवैत में बहुत struggle किया मैंने. फिर I could not find a solution. That at least I could see my son staying in Kuwait. That was the content kept me to stay in Kuwait. I stayed there 8 months illegally from Jan to September because मेरा residency खत्म हो गया था. और residency transfer करने के लिए भी मना कर रहा था because in Kuwait from office to office you can pressurize the office to transfer the visa, but from family to work nobody can pressurize the husband. So he was not transferring the visa. He's like, you come on your own. I will not give you visa. And that time COVID was going on. No company was issuing new visa. Lot of problems I was facing that time. So finally, in August, 1 month, he was not in Kuwait. I used to call my son. I used to go and meet my son every week, 4-5 days. Because मेरी अदनान my son, उसको eyes के अंदर redness हो जाती थी because constant TV और tab. जब तक मैं as a mother take care करती थी, I used to keep him away from TV and tab more than an hour. That was the maximum I would allow him. I would play with him. I would take him around the city. So I used to pass his time out. But since he is a careless father, he would not spend time. He would give him tab. He would buy Xbox. So पूरा time अभी कोई भी बच्चा तो excite हो जाएगा ना, TV मिल गया, tab मिल गया, studies गई भाड़ में, खेलना नहीं ये नहीं. So his eyes used to get red. तो 2 बार ऐसा ही इंसिडेंट हुआ. मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है पुलिस का कुवैत का. One time he said, I will not take him to the doctor. You do whatever you want. And जैसे यहाँ पे आधार कार्ड है, इंडिया कुवैत में भी एक सिविल आईडी है, उसके बिना कोई भी आपको सर्विस नहीं दे सकता है. So I called the police कि my son eyes are red and he is not allowing him to take to the doctor. तो पुलिस को कॉल करके उसके पास से आईडी लेके मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई. फिर after 1 month again same incident हुआ because the redness had not gone. It again came back. Again I called the child protection. Same thing. He did not allow me to take him to the doctor. So when my son is with such a person, you can imagine as a mother how I must be having feeling tension for my son because he's not a good person. If a good father, at least I would be still just fighting. But I am so every day I wonder what my son must be going through. Every day junk, every day TV. पूरा मतलब मेरी जो परवरिश मैंने उसको इतना दिन रात करके उसको अच्छे से बड़ा किया, उसको अच्छी परवरिश दी. Within few months ही उसने उसको पूरा उसको हटा दिया मेरे जहन से उसको. तो अभी इंडिया में भी आके अगस्त में मुझे पता चला कि वो 1 month तक ऑफिस में नहीं है. तो I should keep checking with the office in the where he works. मेरे पास सब नंबर है, सबके कॉन्टैक्ट्स है, मैं सबको कॉल करती रहती थी. तो बोला वो लीव पे गया है. मैं बोला 1 महीना हो गया अभी तक नहीं आया. Did he give leave and like forever he left Kuwait?
because that was a possibility, because he was planning to go to Australia. Maybe he can go over there with my son. 1 month हो गया, he did not come back. So I told my India lawyer, मैं क्या करूँ? He said, you आप India आ जाओ, हम यहाँ केस फाइल करके immediately इसके ऊपर अरेस्ट वारंट जो भी अगर इंडिया में है तो हम इसको यहाँ पे बंद करवा देंगे, इंडिया से बाहर जाना. So I flew down in September. And after October, November, something, my mother came to know that he had done second marriage. For that reason, he had come down to India. And when I came down over here, he went back to second marriage. Second marriage, which year? 2021. 21, without divorcing you, without settling anything with you? Yes, without divorcing me, he has done second, which is by the way case बनता है उसके ऊपर, because without my consent, without my divorce, he has done second marriage. तो उसके ऊपर बहुत सारे सेक्शन, इवन ये ट्रिपल तलाक का पार्लियामेंट में अमेंडमेंट भी हुआ, इसके बाद ही हुआ, इसके बाद में ही. I hope, because so like there are a lot of sections filed on them. 498A theft, suicide attempt, abetment to suicide भी है. इतने सारे sections filed है उनके ऊपर, पर उनको कुछ ना हल्का फातिमा जी, आप फिर वापस आ गए यहाँ पर, एक एक करके जाएंगे हम, बाद में आप पूरी होने के बाद आप बात करिए आपको किस तरह क्या अन्याय हुआ. तो उसके बाद में क्या हुआ? फिर मैं इधर आ गई तो फाइल किया हमने, तो सितंबर यहाँ गए, सितंबर 2021 आप यहाँ आने के बाद आपको पता चला कि वो दूसरी शादी किया है, क्योंकि आप लाइव में हैं, आप ये लाइव में हैं, आप साबित भी करना पड़ेगा कल के दिन, क्योंकि आप लाइव में हैं. और आपको किसने बताया ये दूसरी मैरिज किया? उसने व्हाट्सएप पे डीपी डाला था अपना सेकंड मैरिज का, तो मेरे मम्मी के पास देख लिया था उन्होंने कि इसने सेकंड मैरिज किया, वो फोटो क्लिक कर लिया मम्मी ने, तो मम्मी ने मुझे सेंड किया, मेरे लॉयर को सेंड किया. मेरे लॉयर ने बताया कि उसने सेकंड शादी की हुई है, उसका डीपी में पिक्चर प्रोफाइल पिक डाला हुआ था उस, तो वहां से पता चला. हम वो कुछ है आपके पास आधार है? अभी आपको मैं प्रेजेंटर बनाऊंगा, बता सकते हैं आप दुनिया को, क्योंकि दूसरी शादी कर लिया है बिना डाइवर्स के, और आपका बच्चा भी 12 साल का है, और बच्चे को भी आपको नहीं दिया गया, तो नए मैरिज कैसे कर सकता हो? ये तो है, ये तो कानूनी. आपके पास कुछ सबूत है? डू यू हैव एनी एविडेंस मैडम? Yes, I have evidence. Shall I make you a presenter? आपके व्हाट्सएप में है अभी, या नहीं तो मेरे को भेजोगे, मैं कुछ बताऊं दुनिया के लिए? Yeah, WhatsApp में है. I have to search and send. Can I take a break and send? नहीं, आप बात करिए, बाद में भेजिए. तब तक मैं, you want to take a break and send? No problem. तब तक मैं डॉक्टर सूजन से बात करता हूँ, क्योंकि लोगों को हम बताएंगे आप किस तरह आपको अन्याय हुआ, न्याय नहीं हुआ, और किस तरह घरेलू हिंसा, क्योंकि लोग समझते कि खाली मारपीट ही नहीं, इस तरह के भी घरेलू हिंसा होगा. घरेलू हिंसा का मतलब क्या है? आपके दिमाग से खेलना, और खाली आपके जिस्म से नहीं, आपके दिमाग से खेलना. और आपको एक बच्चा है 12 साल का, बच्चे को आपसे दूर भी करना एक दिमाग वाली बड़ी खेल है. तो आप ढूंढ के आप अगर आपके पास ही है तो आपको प्रेजेंटर बनाता हूँ, आप सब कुछ बता सकते हैं, या नहीं तो मेरे को भेजने से मैं बताऊँगा, आपकी मर्जी. आप ढूंढिए. यहाँ रुकते हैं हम. डॉक्टर फातिमा, दूसरी मैरिज 221 में वो आश्चर्यचकित हो गए. शी सरप्राइज्ड विद द सेकंड मैरिज ऑफ हर हस्बैंड. शी कम्स टू नो थ्रू हर मदर who has clicked it, and she is going to present it in the evidence form. Let me go to Dr. Susan. What is this happening, Dr. Susan? Very shocking, because I was surprised to hear all this. Such a learned lady, how could this happen? And that too after triple talaq. Yes. After triple talaq has been amended by our parliament. So how do you look at this scenario at this stage, till this stage? Okay, so can you hear me? Yes, madam. Please go ahead. Yes, I was talking to Fatima quite some time ago also, and when it comes to domestic violence, there are different types of domestic violences. Violence is violence ultimately, whether it is done physically, emotionally, mentally, all these things. The violence is always something which is hurtful, and it breaks the relationship, and it is not permissible. And in our country, we being a social worker,
as well as a nurse, and different roles I play in the communities, I see that so many varieties of violence is happening. And in our country, somehow women are taught to keep quiet, bear it, don't talk about it. So that kind of mind, I call it mind programming, is done to the women in our country. जैसे कि हम कहते हैं ना कि लड़कियों को बचपन से तैयार कर देते हैं, जिस घर में आपकी डोली गई वहां से आपकी अर्थी आनी चाहिए. इस लेवल का जो प्रोग्रामिंग होता है वो वीमेन के साथ किया जाता है. तो मैंने जो जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस देखे हैं, केसेस देखे हैं, वो तो मेंटल और कहते इमोशनल का छोड़ो तो इतना भयानक फिजिकल टॉर्चर्स तक होते हैं. ठीक है, तो ये है अबाउट वायलेंसेस, अलग अलग प्रकार के वायलेंस होते हैं. सो फातिमा जो है वह एक अलग लेवल में है, जहाँ पर उसको मेंटल एंड इमोशनल ये वायलेंस सबसे अधिक फेस करना पड़ा है, जहाँ पर उनका जो बच्चा है उनको उससे अलग किया जाना, और जब उनको मालूम है कि उनके जो हस्बैंड है उसका कैरेक्टर इस टाइप का नहीं है कि वो जिम्मेदारी लेने वाला पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन महसूस नहीं होता है, तो उसके पास बच्चे को रखना, ये जो इनकी तरफ से जो बयान आए हैं उसमें से महसूस जरूर होता है कि ये अलग टाइप का एक टॉर्चर चला है, और ये इनके जिंदगी का सबसे बड़ा पेन है. एंड उस पेन को उसका सामना करने के लिए वह पूरी तरीके से लगी हुई है, अपना तन मन धन सब लगाते हुए लगी हुई है, बिना ज्यादा सपोर्ट के. पर उसके अंदर जो ये फायर है, जो जस्टिस का फायर है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एक आशा है. देयर इज अ होप नॉट ओनली फॉर हर सेल्फ, बट देयर इज अ होप because of her that many women who are quietly suffering, they may come out. So this is the first way of understanding, which I would say, and the next will be the solution. So you tell me when we are going to talk about solution, because when a problem comes, the next step is solution. So I would love to get into that once you get all the explanation. And solution we'll talk now. She has sent the photograph. I'm just trying to show right from the as soon as I announce the show, there is a serious technical hitch because she has sent. I'll try to show you in a big way, in a better way, but till that time hold your breath. This is surprising. And he is here. This has been shared by Fatima. I think it is Fatima's son with a new wife. Am I right? Fatima ji, आप unmute करके बात करिए. I hope the entire world is watching. This is Fatima's husband. अनम्यूट करिए, बिकॉज मैं शेयर करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. आज पूरा हैक हुआ सो है. दिस इज द लेटेस्ट फोटोग्राफ विच हैज बीन शेयर्ड बाय फातिमा जी. शी सेज हर हस्बैंड इज कम्युनिटी व्हेन वी गेट मैरिड, हम ऐसे पहनते हैं लड़का, और ये पूरा ब्राइडल का पिक्चर है. लाइक नोबडी कैन से दिस इज नॉट अ मैरिज पिक्चर. No one can say this is not a marriage picture. In Bohra community, this is how they get dressed when during marriage ceremonies, and this is what I'm trying to show you the entire world. You can dispute us, even her husband can dispute us. My number is there. He can come on live show and state that he is not married. But why this photograph with her son, Fatima's son, and why did he go away again from India? Why they plan to send her to India? Why he has not accepted her? That is the $1 million he has to answer. So I'm showing the visuals again on your screen. Fatima's husband, Fatima's son, and who is this other woman in his life? She says, Fatima says this is how they traditionally dress during the marriage,
and she says he is happily married for the second time. Fatima's allegation is that her husband is happily married for the second time. Here is the photograph. Without divorcing her, without allowing the custody of her blood son. Yes. Go ahead, Fatima ji, please. या सो इंडिया में भी मैंने बहुत लॉयर्स को हायर किया, प्राइवेट लॉयर्स, एंड टू माय बैड लक आई डिडंट गेट अ गुड लॉयर. किसी ने भी मेरा केस सही से नहीं लड़ा, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस में एज आई सेड इट्स नथिंग टू डू विद डिवोर्स. डिवोर्स के बाद भी आप डोमेस्टिक वायलेंस फाइल कर सकते हो. तो मेरा ये बेस के ऊपर ही मेरा 498 है. पुलिस ने 2 महीने तक नहीं लिया, ये बोल के आपका डिवोर्स हो चुका है कुवैत में. पर वो टाइम पे मुझे नहीं पता था कि डिवोर्स हैज गॉट नथिंग टू डू विद डोमेस्टिक वायलेंस. मुझे बाद में पता चला इसके बारे में. नहीं, ये बताइए आपको तो कुवैत में डाइवोर्स हुआ आपका? उसने किया, ही डाइवोर्स्ड मी वन साइडेड. इस्लाम में है ना, यू मेन कैन डाइवोर्स विदाउट द वुमेन्स कंसेंट, बट इन इंडिया दिस काइंड ऑफ डिवोर्स इज नॉट वैलिड. नो, ऑलरेडी पार्लियामेंट ने बिल पास कर चुका है मैडम. तलाक नहीं चलेगा यहाँ पर. वही तो मैं बता रही हूँ. वो एक ही बार जो तलाक किया, थ्री स्टेज ऑफ डिवोर्स फ्रॉम मेन टू वुमेन इन इस्लाम. तो अभी तक उसने एक ही डिवोर्स दिया है कुवैत में. सेकेंड और थर्ड फिर भी अभी भी बाकी है. बट अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टिल दिस फॉरेन divorce which is not taken by fraud is not accepted in India. So still I'm fighting for this only in the court. My respondent lawyer is always saying she's divorced. So I'm tired of telling the judge that I'm still legally married. Even if I'm divorced, domestic violence has got nothing to do with divorce. But कोई भी इस बात को अच्छे से रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है मेरे केस को. Nobody is. जब मैंने खुद अपना केस लड़ने की कोशिश की, तो तब भी जज साहब ने मेरा नहीं सुना. कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, यू कैन फाइट योर ओन केस. इवन दैट आई डिड, बट जज साहब नहीं सुनते हैं मेरा. उल्टा पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में बुला के मुझे डराते, अगर आपने थोड़ा भी आवाज ऊपर किया या आपने सही से नहीं केस लड़ा तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा. मतलब पुलिस ऑफिसर वहीं पे खड़ी रहती कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो मेरे को अरेस्ट करेंगे. मतलब इतना मेरे को टॉर्चर हो रहा है जज कोर्ट के अंदर. I cannot even fight my case properly in spite of doing all the research work of the laws. Then again finally I hired a lawyer because I didn't have money, so I went for a legal aid lawyer. उसने भी मेरा केस सही से नहीं किया, तो फिर मैंने खुद से लड़ा. वापस मुझे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा. तो मेरे पास जितना फ्रीडम है, जितना भी मैंने सेल किया, अभी भी थोड़ा गोल्ड है, तो उसको सेल करके वापस मैंने दूसरा एडवोकेट हायर किया अभी कि आप ही लड़ो मेरा केस. बिकॉज जज साहब मेरा सुनते ही नहीं है कुछ भी. मैं क्या करूँ? इतना मेरा केस स्ट्रॉन्ग है. ऑल एविडेंसेस आर देयर. माय रिस्पोंडेंट लॉयर इज जस्ट लाइंग इन द कोर्ट. All false NC, she is doing nothing. All she's saying that she was deported from Kuwait. I was not deported. I came in proper flight. वो इतना झूठ बोलती है. कोई जज उसको कुछ क्वेश्चन नहीं करता कि एविडेंस के बिना कैसे कोई कोर्ट में झूठ बोल सकता है. वो बिना एविडेंस झूठ बोलती है कोर्ट में. ना मेरा एडवोकेट उसको काउंटर क्वेश्चन करता है, ना मेरा जज उसको काउंटर क्वेश्चन करता है. कौन सी कोर्ट में चल रहा है केस आपका? मैं सुसन के पास जाता हूँ. सुसन वांट्स टू मेक. कौन सी कोर्ट? सिवरी कोर्ट में. सिविल कोर्ट? सिवरी कोर्ट. कहाँ? सिवरी SEWRI. Okay, I'll come back to you. Susan wants to make. Yeah, Dr. Susan, I think this is surprising. How can the courts be so this thing? How is that they are not allowing her to speak? और मैंने डोमेस्टिक वायलेंस की पिक्चर्स भी शेयर की, जहाँ पे उसने मुझे मारा था कुवैत में. वो भी पिक्चर्स मैंने शेयर किए. उसने मुझे कुवैत में भी मारा था, मेरे कान पे जोर से लाफा मारा था. उसका भी डोमेस्टिक वायलेंस का रिपोर्ट मैंने सबमिट किया है. फिर भी जज इज जस्ट नॉट लुकिंग इनटू माय केस. अगर आपका कुछ है अभी फिर भेजिए. और एक बात मेरे व्हाट्सएप पे मैं वो भी बता दूंगा. हस्बैंड का सेकंड मैरिज और आपके वो फिजिकल वायलेंस के भी केस कुवैत में बताइए. वो भी दुनिया देखने दीजिए. जो अगर जज भी होगा, कोई आपका वकील भी होगा, वो भी देख रहा होगा. या सुजन, तब तक वो भी भेज दीजिए मेरे को. वो भी बताएंगे. यस डॉक्टर सुजन, आई थिंक सरप्राइजिंग, शॉकिंग. Very sorry to tell. I have another live program at 9. They have already come on, so wanted to move on for that. For Fatima, what I have told her that our pain should become our purpose in life.
So this is the pain, and she must go through it, and we all will help whatever way we can. But one has to prepare the mind, and I like Nilesh Ojha. He is a lawyer now, but he was an engineer once upon a time. And when somebody did the injustice to him, that is the injustice done by the justice himself, the chief justice himself, and that is what somebody guided him, that you better fight your own case. So he went and did his law and specialized in how to punish the judges when they do not follow the law. And he is the lawyer now today, Nilesh Ojha, who I think more than 5 or 6 judges have been into jail because of their injustice they did in the court. So in the court, law is the framework within which everyone, including the Chief Justice, has to work. Okay, so Fatima did not have to get frustrated and give in. Even it may take, she may not have her child with her now. She may not have anybody helping. Your voice, audio has gone. Dr. Susan, your audio. So she may not. Can you hear me now? Yes, please. So she may not have anybody helping now, but some are there to help her. What I tell her, I advise her that go and do your law, specialize in this domestic violence, must get justice within 60 days, and she can change the course of history. That is what my advice to her, and I'm sure she will be one day a judge herself, and she will give the justice to people who are suffering. This is my best wishes for her, and I'm sure, have patience and fight. Never give up, never get frustrated. That is what I would tell, and I will move. Can you please permit me to move on? 1 minute, 1 second. 1 minute. No, 1 minute. You are. आपने मुझे लॉ की पढ़ाई करने के लिए बोला है, पर बिना 3 साल की पढ़ाई में अभी भी आई कैन प्रूव इट इन द कोर्ट 60 डेज में इजीली डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो सकता है, अगर आपको लॉज को सही से टाइम पे इम्प्लीमेंट करे. यहाँ तो जज भी इम्प्लीमेंट नहीं करता है, एडवोकेट भी इम्प्लीमेंट नहीं करता है. लॉज आर जस्ट इन द बुक्स, नोबडी इज इम्प्लीमेंटिंग द लॉज. Then they're blaming the judiciary. Judiciary इतनी अच्छी है हमारी, इतने सारे law है, but the advocates and judges, they don't know how to fight a case. What exactly I'm saying, अपना लॉ अच्छा है, लेकिन लॉ को चलाने वालों में करप्शन है. तो आपको सारा लॉ मालूम है, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है, तो क्या करना है? जैसे 60 डेज में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस खत्म हो सकता है, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस खत्म हो सकता है. 60 डेज में देखो, आप ऐसा चैलेंज करोगी तो एब्सोल्युटली करो जाके 60 डेज में, पर जब नहीं हो रहा है, आपको मालूम है सब कहते हैं जस्टिस नहीं हो रहा है, तो आप खुद पढ़ के खुद लॉयर बनकर उस जगह पे सब परिवर्तन करके लाओ. यह भी एक ऑप्शन है. That will be after some time, but right now I need my son and my rights first. That too I will definitely fight for other women. You must fight now also. You ask, you must try everything you can do, but never lose hope. You must also do for a long-term justice case also. Even every good thing happens in the world, in our life, with sacrifices. So what I wish is that your sacrifices will never go in vain. It will be up to the highest. You just do it and it will happen. All the best. One last word from you, Dr. Susan. How is that even the court magistrate doesn't allow her to speak, and when she clearly states, and because we are live, I hope all the magistrates in Mumbai and everywhere are listening to me, and all those women organizations and advocacy bodies too. When she is not deported, how is that wrongfully that is being attributed to her that she is deported? First thing. The second thing, she clearly states that I have evidences of physical torture too, along with the mental torture, emotional bargains. That also she is trying to produce. The third, as per our own Bora community, Muslim, Islamic, the divorce
She says it has been done by fraud without her knowledge. Even in that case also she says only first stage has been gone through. The fourth aspect, she was left there. He flew to India without her knowledge. No one gives her knowledge. When she comes to India through her mother, now we have shown the picture to the entire world. If we are wrong, you can always prove us wrong. My mobile number is there. We will play your side of story also. Because we are very open, we are very transparent. We deal the issue as per rule of law, constitution, invoking evidential act. This is directly to her husband and the lady who is there, women in there. If they have any grouse against this picture or this show, they are most welcome to participate. But now she finds her mother sends her a picture wherein the Bora community, the fourth aspect, that is the traditional dress they wear during the marriage. And see, he is marrying for the second time without a proper divorce, and he is marrying in India from where he married Fatima, and in India he has not divorced her, and even the three phases of divorce as per Islamic this thing he has not gone through. And then her blood brother son, yeah, 1 second, I will take one word of your, her blood son is there in the picture with that woman. And in spite of all these vital evidences, how do you think the courts are silent? How is that she's still running around from pillar to the post even in India seeking justice, that too in Mumbai? One word from you so that I'll let you go. After that I'll speak to Fatima. Yes, Dr. Susan, one from... See, I don't know what one word I can give about it, because some like when No, these are all, corruption is at there. least as a layman, when I'm hearing her for the first time, I'm able to understand four Yeah. constitutionally clear evidences. And how is that court or anyone cannot understand that? I may be wrong. They let them prove me wrong. But with her thoughts being shared across the globe now in a live show, this is what is given to understand. When we are able to understand, how is that a judge or a magistrate and the entire justice system, including court officers, how is that they are not understanding? How is they are threatening her by showing police? And who are these all? They are all public servants. How do you look at this scenario? This is what I am trying to ask you. So what I say is that this is a clear indication of corruption, and it is not the lack of law present in our justice system. Justice system is good, law is there, only the implementation part has got corruption. So our fight is more against the corrupt system, not against the law. Law is there to help, but it is not being implemented, and that is where the struggle is happening to Fatima and many women and men who are like not getting justice. That is the corruption, and we have to fight that. So it is not a short fight. It will not happen in 60 days, because there are so many reasons. Even the lawyers themselves are not taking up the cases. So what I would say is that have a lot of patience, never leave it halfway, complete it. Don't waste your time while you're fighting. While you're fighting this, do your law itself on this and fight it to win. God bless you, and you continue your conversation. I have to leave, okay? Please. God Thank bless you. Thank you, Dr. Bye-bye. Susan. Bye. Yeah, thank you. Yeah, Fatima ji, now it is very clear. Now you have time. You go ahead now. After you find that he is married for the second time, now you tell me from there what happened then. Because I have shown it to the world very clearly, 4 legal evidences that something has gone wrong with Mrs. Fatima. How is that courts have ignored the court officers, and how is that justice is not being done? Yes, you tell me after that. After you found that he is married for the second time, then we put that also in the file after, because when we had filed the case, we had not known, but we amended, we put this also in the file. So the judge is aware about it. The pictures are being provided to the court. Everything is being provided. Even the domestic violence pictures, the जहाँ पे blood निकलता है, मुझे उसने कुवैत में मेरे को मारा था, मेरे से हाथ से फोन खींचने के टाइम पे भी उसके नाखून के निशान जो लगे हैं, वो सब पिक्चर्स भी सबमिट किए मैंने. I have proven domestic violence, financial torture, emotional torture, mental torture, physical torture. All 4 torture I have proved to the court. But yet I am not getting
any justice till now. Not a single justice has been served for me till date. Because of the advocates first who took up my case, they did not have the law knowledge. Mainly because of advocates who don't have law knowledge. I will appeal in the Supreme Court after some time that all these advocate licenses should be cancelled because मैंने already bar council में डाल दिया है. All these advocates who were on my case, I had hired around 8 advocates on my case. सबके against मैंने bar council में डाला है. बार काउंसिल ने बोला 3 महीने तक वेट करो, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. आई एम वेटिंग टिल August 10. अगर नहीं एक्शन लिया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में सीधा अपील करूंगी. बिकॉज सच एडवोकेट्स हु डोंट हैव लॉ नॉलेज and they fight cases in the name of making money, then why you come in this profession? Police hai, doctor hai, lawyers hai, teachers hai, noble professions are not money making profession. You go in other field if you want to make money. Leave these 4 professions. These 4 professions deal with a life. एक लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हो आप लोग पैसों के लिए. कोर्ट में हम क्यों आते हैं? जस्टिस लेने के लिए. यहाँ पे सच को झूठ को सच करते हैं एविडेंस के बेसिस पे. मेरे रिस्पोंडेंट की एडवोकेट तो बिना एविडेंस के झूठ बोलती है और कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है. कोर्ट में ये भी जुडिशियरी में ये भी प्रोविजन है, यू कैन प्रूव कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इवन द जज एंड द एडवोकेट कैन बी अरेस्टेड. I want the judge and the advocate respondent to be arrested because they have proven that they have done contempt of court, abusing the process of law, giving false evidences, false accusations on me. ये सब कोई भी इस चीज को नहीं टेक कर रहा है, कोई नहीं टेक केयर कर रहा है इस सब चीजों को. और जज को अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है. 60 डेज के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस केस खत्म नहीं किया, उसके ऊपर से पहला जज तो निकल गया, दूसरा जज आया, उसको भी 1 महीना हो गया है. पूरा फाइल देखने के बावजूद अभी तक मुझे रिलीफ नहीं दिया है, जबकि मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर होता है कि he can pass orders and give me the relief. He is not doing that. Overseas डोमेस्टिक वायलेंस में टेम्पररी चाइल्ड कस्टडी भी है, तो मैंने ओवरसीज का अरेस्ट वारंट के लिए अप्लाई किया, वो भी जस्ट आपने कैंसिल कर दिया. क्यों? Why he cancelled the overseas arrest warrant? It is my right for my child. So कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है. I am not getting the right advocate to fight my case. You are not getting the right advocate. There are wonderful advocates and who come out and try to help. Now, those who are watching this live show. So many evidences are struggling और respondent के पास कोई evidence नहीं है कि मैंने उनके ऊपर torture किया है. फिर भी वो लोग they are not being, they're just escaping every now and then. This is a fervent appeal from Fatima, Mrs. Fatima. She has evidences on her side. No one listens to her. There are wonderful advocates in Mumbai and elsewhere. I hope whoever is watching this show will become sensitive and very sympathetic to her case. We are not saying that there are no other issues, the other side of the coin, wherein the male partners in a marriage, the husbands are also facing the music from their wives too. We are not stating that also will be telecasted live, but come out with evidences, as Fatima is trying to come out with an evidence stating that she is very badly neglected by law. Justice is not happening. The constitution which gives her rights, those rights are infringed. Where should she go? This is a $1 million question I have been asking the Parliament and Honorable Prime Minister. Along with the central government, you have made amendments to triple talaq. Then you see here, the case is right in front of you. What will you say about this? He has not sought divorce in India. He has married Fatima here in India, went to Kuwait, and in Kuwait she says out of fraud, he divorced her, that too only one step in Bohra community's talaq. Other 2 steps he did not follow. After that, all of a sudden he shifts. Bohra community. In the Kuwait law, he has divorced me. Bohra community में तो कुछ divorce हुआ ही नहीं है. They were forcing me to sign. I said I will not sign the divorce paper. So he divorced me through Kuwait court. Yeah. So through Kuwait court, I am standing to get corrected myself. Not Bohra community, not Indian law. Kuwait law has given her divorce. Are you sure it has given you divorce from Kuwait court? Officially? Yes, from Kuwait court. But as I said, it is first attempt, second, third attempt अभी तक नहीं हुआ है, तो I'm still legally married. And it is by as per Kuwait that again. is also not considered Let me put it this to the world very clearly. Even as per Kuwait court, you have second chance and third chance.
Yes, Am I yes, right? still left. Because I am not aware. Yes. You just try to enlighten me. I am Yes. not aware, So, because we have to be very clear with the law of the land. yes, Because you yes, have to, because you are educated, and I hope I believe you. So you mean to say, yes, as per Kuwait Code 2, only one legal step has been taken towards you to divorce you. There are other two steps wherein he has to go through that formality. Only after that you are legally divorced. Now you say till yes, that time, even as per Kuwait Code, you are his wife. Am I right? yes, yes, I hope the entire world is listening to this. So she is not still legally divorced, even as per Kuwait Code, which he claims that he has divorced her. On that name, he has married another woman. I am not saying. It is Fatima and her mother who have shared this photograph to the world. I'll show you again if you want. And this is how Bora community dresses when they get married. And she says he is married again. When she was there fighting her case in Kuwait, he all of a sudden vanishes from Kuwait without her knowledge, and he comes to India, and she says her son, her blood son, along with her husband and with another woman. She says it is the traditional attire of Bora community marriage ritual. So he comes to India, he marries, and he flies back. And now she doesn't have a legal visa to go back to Kuwait, nor her money, nor her mental state. And she clearly states that she is not deported. That is also, she is very clear. She is not deported to India. She has come legally through flight. Now, I can give my passport in the judge to verify. My passport is there to verify. so she is coming out open, Mr. Judge, of whichever court she is going, court officer, public prosecutor, and the area police station or women's police station, women's wing in Maharashtra. What is that you are doing? Such injustice is happening to her, and she says she is ready to provide her passport, that she is not illegally detained and deported. She clearly states she is going to present her physical torture, the domestic violence. Now she is presented that her husband is married again as per the Bora customs, and he has again left with her son. When he is marrying, where is the need for her son to be there with him? And she clearly states on record on this channel that as per Kuwait law too, there are two stages still to legally accord divorce as per Kuwait law. So these are all the vital evidences. Now she is questioning the Indian justice system. Domestic violence cases should be settled in 60 days. So many high courts have done that. Judgments from high courts, she quotes, that I will try to show you if I am connected. So justice is not happening in 60 days, but she is made to run around, and she is facing the threat from the judge that if she speaks, she will be arrested. अरे यार, what is this happening in India, जज जी? कसब को नंगा पकड़ा गया, कसब, पाकिस्तान का कसब को, उसको एसी रूम में लगाया पूरे दुनिया को दिखाने के लिए, हमारे पैसा. You have spent our money on that. How many months he was there in the jail? Happily enjoying his food, मुंह मांग गए उसको. लोग दुनिया को बताने के लिए हमारी जस्टिस सिस्टम क्या है, हमारी न्याय क्या है. खसब को अगर आपने इस तरह की छूट दी, इस तरह की आपने न्याय दिया, क्यों आप फातिमा को सता रहे हो, बताने पड़ेगा. और उसी समय में बॉम्बे के जो भी हादसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट 12 बजे खुला. When they were dealing with Bombay blast cases, Supreme Court was functioning even late in the midnight, early hours. Then what is happening with Fatima? What happened to courts? What happened to judges and justice system? Kasab, they used our money to show the world that principles of natural justice prevails in India. Then what is happening with Fatima? Is this the way justice system runs? This is what she is questioning you. I only hope after this live show, better sense prevails on all those. And I am clear, very clear. I am ready to host the other side also. You prove us wrong. Through the same live show, I will host her husband or husband's family to prove Fatima's evidences wrong. I will
play those live evidences from your side so that the justice system will prevail over you. But till that time, don't you think these courts, public prosecutors, the court officers, you mean to say advocates, don't you think they should listen to Fatima? Doesn't she have a right? She is married in India, in Mumbai, migrated to Kuwait, now comes back only to know her husband is married happily for the second time, and again he vanishes to Kuwait with her own son, blood son. Is this what the new law amended for? Azadi ki Amrit 75 years of independence we are about to celebrate. What is happening to our Indian women? And again I am stand to be corrected. Even men, when they are harassed by their women counterparts or wives, the same question I will be asking them. What is happening to such a beautiful relation called marriage? Why, if something is going wrong, even in spite of counseling, she says counseling record is also there. She has presented everything to the world now. How is that court fails to understand these evidences? Why courts are trying to belittle our own evidence? She says, I am ready to show my passport. Prove that I have been detained and deported. Prove that no physical harm or mental bargain has not happened with her. Instead of going through, because our courts, they want evidences. When the evidences are there very much clear, how is that the courts are still allowing the case to run in a different way? And she says she has sold her gold to survive. No one to take care of her. Whom should she depend upon now? That is the reason why this show we said Constitution, rights and justice. It is left to you all concerned. I expect the justice system prevails. Yeah, Fatima ji, you want to say something, please? Yeah, I have always praised the Indian judiciary. In fact, the advocate said the judiciary is slow. I said, don't tell it, judiciary is slow. आप लोग को case लड़ना नहीं आता है. You all don't know where to implement the laws at what time. Judiciary को बिल्कुल blame मत करो. Judiciary के पास इतने अच्छे laws है कि easily domestic violence के 60 days में खत्म हो सकता है. जब अगर judiciary ये law बनाया है and you question this that it is not possible, that means you are questioning the judiciary. So you are insulting the judiciary being an advocate. I am to supporting the judiciary being a victim. Now, what is that you want? This is my question. Now, what is that you want through this show? Before we wind I up, want Prime Minister ji and Mr. Kiran Rijiju, who is the in charge of the law system right now. And I, as a victim, also still praise the Indian judiciary and so-called advocates and judges. They don't even finish the domestic violence case in 60 days. They are the ones who say that the judiciary is slow. They are the ones who is blaming the judiciary. So I am praising the judiciary being a victim. Don't I deserve justice in time? yeah, this is what the show is all about. She is demanding all those responsible. Can't my case be over in that time frame? So that this drag, he is mentally draining her, physically torturing. It's a torture for her in all aspects, as she is away from her son, away from her husband, and there she says he is happily married and enjoying his life at the cost of her suffering. What wrong I have done? And even the Bora community, how can you be so silent, so ignorant? If I am wrong, correct me. Because the Bora community doesn't help, her parents doesn't help. Where should she go? Now you tell us. The government should come clean now. All those organizations, where are you? And my humble request through this show, all those advocates, wonderful people who are there, kindly come to our rescue. Kindly come to our rescue. Yes, as evidence based. You can cross check our evidences once again. And if there is anything wrong, you can correct me too. You can correct me too. But kindly come to our rescue. Listen to her. She is pleading. She is demanding. That is how our constitution goes. Remember Khasab. Our hard-earned money was spent to show to the world principles of natural justice by hiring an advocate
in spite of he killing everyone, very clearly caught. He has been given biryanis, he was in the name of security, he was there in AC rooms, Mu Manga, he was demanding everything, getting everything, till he was hanged to death. And about bomb blast, Mumbai bomb blast, midnight Supreme Court functioned, early hour Supreme Court functioned. But how can Supreme Court or High Court or normal courts discriminate between haves and have-nots, between criminals and normal citizens? Every citizen is a constitutional authority in India. The justice, it should be equal justice, time bound. Otherwise, everyone is liable. This is as per the basic structure of constitution. No one should be above the law. It's only the citizen who is the constitutional authority himself. Rest are all public servants. But how is that the public servant system bossing over the bosses? That is how, and that is why lack of awareness among the citizens is driving the system crazy and making you to suffer and suffer. At least let us hope through Fatima's case there will be a full stop to all such type of harassments. Yes, as per rule of law, all evidences should be taken into consideration. Not just Fatima, even if there is the other side is Mr. also, if he is facing same problems, even he should get justice. That too in a time bound way. Time bound way, as law suggests. That is what we really expect out of this show. All sensible minds will come together and they will try to protect the law of the land. We will all say during this 75 years of independence celebrations, we say our constitution is supreme. Every citizen gets justice, and when their rights are infringed, this justice delivery system will never slacken, will never say we are not there. This justice system should deliver on time so that the confidence in the system prevails and truth prevails. So we say before we go, Satyameva Jayate, let Fatima get justice like many more Fatimas who are there still fighting. Keep fighting. You can write to us, and not only Fatima, even Misters, whoever is suffering, even you are most welcome to join our show, because here equijustice and at the same time speedy justice, so that people will never lose confidence in our judiciary or justice system. Thank you. Take care. Thank you. Let us hope the best will happen with you as per rule of law. Don't lose hope. I am there to do number of shows. Don't worry. Keep fighting, madam. Keep fighting. We are all there with you. Yes. Okay? Thank you. Thank you for the support. Thank you. God bless you. Satyameva God bless you. Jayate. For all the Indians, we say Sukhanidra Shubharatri. For the world over, Jai Hind. good morning, good afternoon, and good evening. Before I say Jai Hind, as she aptly reminds me, because we are celebrating 75 years of independence, that is what our Indian blood is. Fatima's blood says Jai Hind before we say. That is the beauty of our Indians. That is why we love this country, this motherland so dearly. Do support DRTSPR channels. DRTSPR channel, Citizens DRTSPR channel, Environment People DRTSPR channel. We do shows in larger public interest, very clearly defined issues as per rule of law, constitution, invoking evidential act. No enmity against individuals, nor animosity against any parties or organizations. Jai Hind. Bye. Bye.